Good morning, students of class 4. We are here with the Smart School online virtual classroom teaching. We will start social studies video lesson number 1 today. Chapter 1, topic is globes and maps. Page number 1 and 4 we shall read. Time duration is 35 minutes and resources are required. Smart Social Studies book, 4, notebook and pencils. First of all, we start our lecture. Here are some vocabulary words. You can see these vocabulary words on your book page number 1. Book page number 1, here are some vocabulary words, keywords, which we shall read in the text. Globe and maps. Keywords are prevalent. Prevalent. Prevalent means existing very commonly or happening often. Existing very commonly or happening often. Depict. Depict. The meaning of depict is to represent or show, which is represent karna ya show karna. The word is bulge. The next word is bulge. To stick out in a round shape. Bulge. To stick out in a round shape. These are the keywords. By the end of this lesson, you should be able to define a map and a globe with help of information provided in the book. Differentiate between a map and a globe. So students, what is this? Can anybody tell me? Yes, this is a map. This is a map of Pakistan. Map. This is a map of Pakistan. What is a map? A map is a drawing of all or part of Earth's surface. It may show the visible features such as forests, rivers, roads. A map is a drawing of all or part of Earth's surface. ये मैप जो है वो क्या होता है? एक ड्राइंग होती है या तो एक अर्थ की किसी एक पार्ट की या पूरे अर्थ की कोई भी ड्राइंग होती है. इट मे शो द विजिबल फीचर्स सच एज, ये हमें क्या शो करते हैं? फॉरेस्ट भी शो कर सकते हैं, रिवर, रोड. Maps may also show things that cannot be seen, such as boundaries and temperature. Maps हमें वो चीजें भी शो कर सकते हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, such as boundaries and temperature. जैसे दर्जा हरारत होता है, किसी भी जगह का टेम्परेचर होता है या किसी भी जगह की बाउंड्रीज होती हैं, वो भी शो होती हैं मैप्स पे. Now, what is a globe? Can anybody tell me what is a globe? What is a globe? The spherical model of the earth is called a globe. Sphere क्यों? Earth is like a sphere, round होती है. The spherical model of the earth is called a globe. Now we have a comparison of a map and a globe. Map. A map is a graphical representation of an area, land or sea, depicting physical features. Map क्या है? Graphical representation. Because हमने क्या कहा? ये drawing है, ठीक है? इस पे different graphs बने हुए होते हैं. Graphical representation of an area, किसी भी जगह की, कहीं किसी land की या sea की,
Depicting, I have already told you in words meanings, in keywords, depict, to represent or show. Physical features, वहाँ की जो physical features हैं वो show कर रहा होता है map. Globe, a globe is a spherical rounded model of the earth. A globe is a spherical rounded model of the earth. You can carry a map anywhere, but can't globe. Globe पूरी अर्थ को या पूरी वर्ल्ड को शो कर रहा होता है, और मैप is a graphical representation of an area, land or sea, depicting physical features. Comparison of a map and globe. Presentation कैसी होती है इसकी? 2 dimensional in width and length, and this is 3 dimensional. Globe is a 3 dimensional. Next, latitude and longitude. Comparison of a globe and map drawn as straight lines. Drawn as straight lines, or latitude. Longitude. Understand? Drawn as circles and semicircles in globe. Globe is drawn as circles and semicircles. These lines are called longitudes and these lines are called latitudes. Yes. Comparison of a map and globe. First one was graphical representation of an area, land or sea depicting physical features. Globe is a spherical rounded model of earth. Presentation, what was presentation? Map is 2-dimensional and globe is 3-dimensional. Longitude and latitude, drawn as straight lines and drawn as circles and semicircles. Longitude, जो long इसकी lines होती हैं उसको, and latitude horizontal. Now next one is earth. Whole or a part of earth is represented. Whole, पूरी अर्थ या कोई भी अर्थ का एक हिस्सा रिप्रेजेंट हो रहा होता है मैप पे. एंड होल ऑफ अर्थ रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्लोब. ग्लोब पे होल ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. शोज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. मैप पे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है. कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन इज शोन. ग्लोब जो है वो इसके मुकाबले में लेस इंफॉर्मेशन शो करता है क्योंकि इस पे पूरी अर्थ शो हो रही होती है. अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मैप्स एंड ग्लोब. मेरिट्स खूबियां एंड डिमेरिट्स खामियां. मेरिट्स खूबियां एंड डिमेरिट्स खामियां, कि उसकी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं मैप्स एंड ग्लोब की. ग्लोब इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन of the earth as it is a 3D model of the earth. जो ग्लोब है वो क्या है? वो बेटर रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की क्योंकि ये एक 3D मॉडल है. ठीक है, उस पर पूरी अर्थ जो है वो शो हो रही होती है. 3 डायमेंशनल है, 3 साइड्स पे होता है ये. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मैप्स एंड ग्लोब. नाउ मैप्स आर इजी टू कैरी एंड हैंडल सो दे आर यूजफुल वाइल ट्रैवलिंग. जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैप्स जो होता है वो आपके लिए इजी होता है हैंडल करना. आप कहीं पे भी रुक कर, कहीं पे भी स्टे करके ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप इसको यूज कर सकते हैं.
मैप्स कैन बी व्यूड ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। मैप्स जो हैं वो डिफरेंट स्क्रीन साइज के होते हैं। इट कैन शो अ लार्जर एरिया एंड डिफरेंट फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, रोड्स, लेक्स एटसेट्रा विच कैन नॉट बी फाउंड ऑन अ ग्लोब। हम क्या कर सकते हैं? इट कैन शो, ये क्या कर सकता है? लार्जर एरिया का डिफरेंट फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रोड्स कैसी हैं, लेक्स हैं या नहीं हैं, हर चीज रिप्रेजेंट हो रही होती है मैप्स में, विच कैन नॉट बी फाउंड ऑन अ ग्लोब, जो कि ग्लोब पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, ग्लोब पे फाउंड नहीं होती हैं। अंडरस्टैंड? मैप्स कैन बी व्यूड ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस. It can show a larger area and different factors like climate, roads, lakes, which cannot be found on a globe. ग्लोब पे हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जितनी के मैप्स पे. Let's review what we learned today. So students, what is a map? Map is a drawing of all or part of Earth's surface. What is globe? A spherical rounded model of Earth is called a globe. Two differences between a map and a globe, and the merits and demerits of a globe and map. Map. Two differences between a map and a globe. A map is a graphical representation of an area, land or sea, depicting physical features. And a globe is a spherical rounded model of the Earth. A map is two-dimensional. A globe is three-dimensional. Number 3, on a map, latitude and longitude lines are drawn as straight lines. दोनों straight lines में होती हैं. On a globe, latitude and longitude lines are drawn as circles and semicircles. Whole or a part of Earth is represented through maps. Whole Earth is represented through a globe. A map shows detailed information of an area. Comparatively, less information is shown in a globe. So students, have you seen the difference between a map and the globe? I hope you understand the difference between map and a globe. Now state the merits and demerits of maps and globe. Globe is a better representation of the Earth as it is a 3D model of the Earth. Maps are easy to carry and handle, so they are useful while traveling. Maps can be viewed on different screen sizes. It can show a larger area and different factors like climate, roads, lakes, etc., which cannot be found on a globe. Okay, you have task 1. Write two differences between a map and a globe. Complete the above task in your notebook. You have to do this question. Write two differences between a map and a globe in your notebook. You have to prepare your page. You will leave one page of your notebook. Then homework. Unit number 1 or chapter number 1. Write down the unit name, chapter name, globe and maps. Then write the question. Write two differences between a map and a globe. You can take help from the video, from this table of map and globe. Write two differences between a map and a globe. Complete the above task in your notebook and complete worksheet globes and maps. It is not with you right now. So students, I hope you have understand and you have enjoyed the lesson today. For the next lecture,
Thank you. See you in the next lecture. Allah Hafiz.